आ रही है? ठीक है, ऑडियो वीडियो। चलिए, यस। So good morning everyone. This is session 2 for Signals and System DPP. Okay, I am Siddharth Sabharwal and बच्चा लोगों, आज हम लोग 4 सवाल सॉल्व करेंगे। चारों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इट विल हेल्प यू टू रिवाइज चैप्टर 1, दैट इज बेसिक्स ऑफ सिग्नल सिस्टम जो होता है। ठीक है, तो हम लोग वही बात करेंगे। टुडे विल सॉल्व 4 क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ऑन चैप्टर 1, बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम। ठीक है, चलिए। So let's begin. Good morning. So let's begin. Let's begin with question number 1. So first of all, I would like all of you to write the question. पहले question लिख लीजिए. So signal is energy और power, क्या है ये? Signal energy power है या neither energy nor power है? बस इतना बताना है। कॉपी में लिख लीजिए. Then we will solve question number 1, part A. बताइए पार्ट ए क्या है? क्या है पार्ट ए? एनर्जी है, पावर है, नाइदर एनर्जी नॉर पावर है। विधान भाई नमस्कार। ये थोड़ा छोटा कर दूं, बहुत बड़ा हो रहा है ना। बताइए पहला वाला एनर्जी है कि पावर है? अगर हम पहले वाले सिग्नल को ड्रॉ करें, यहीं ड्रॉ कर देता हूं, यहीं ड्रॉ कर देता हूं पहला वाला, e⁻⁻2t ut। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर। जितने बच्चे एक्टिव बैठे हो बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। ठीक है, बल जल्दी जल्दी बताओ। पहला वाला e⁻⁻2t ut। तो इफ यू ड्रॉ दिस, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि ut लगा हुआ है और t ग्रेटर देन 0 पे एग्जिस्ट करेगा। और ऑब्वियसली सबको पता है, मुझे लगता है कि ये एक डिकेइंग सिग्नल बनेगा बच्चों। डिकेइंग सिग्नल बनेगा, इस तरीके से डिके करेगा। और जब ये डिके कर रहा है, क्या ये एनर्जी सिग्नल होगा? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन है पहला वाला पार्ट। नाउ लेट्स कम टू पार्ट बी। है ना, सिंपल है तो गुड, ग्रेट। दूसरा बताओ जल्दी से, सब लोग पहले देख लो, लिख लो इसको। पार्ट बी पहले लिखो फिर बताओ। आराम से सोचना इसको, आराम, गलती मत करना। e⁻j2t प्लस पाई इंटू टी, e⁻−j। पहले आई एम वेटिंग फॉर यू टू आंसर, देन आई विल आंसर। प्लस पाई इंटू टी यू टी। व्हाट अबाउट दिस? कैसा होगा ये? एनर्जी या पावर? क्या है? पहले नोट करना फिर करना इसको। पहले नोट करो इसको। e⁻−j2t प्लस पाई टी यू टी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड अगर हम इसको देखें, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? e⁻j थीटा, e⁻j थीटा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? e⁻j थीटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है इसका 1। किस किस को सही लग रहा है? ये e⁻j थीटा, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। और जब इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मतलब दिस सिग्नल हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 1 फ्रॉम
जीरो टू इन्फिनिटी क्या सिग्नल बनेगा बच्चा लोगों? ये जीरो टू इन्फिनिटी एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। जीरो टू इन्फिनिटी एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। कौन से सिग्नल की प्रॉपर्टी होती है? एनर्जी या पावर? जल्दी बताओ। ये एक पावर सिग्नल होगा। हैप्पी? सबको समझ में आ रहा है? डन है? परफेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट। 1/2 to power 2 un c 1/2 to power 2 un बताइए। सिंपल है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू आंसर। 1/2 to power 2 un। क्या इस सिग्नल में भी अगर आप देखें, दिस सिग्नल ऑल्सो हैज कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड। दिस हैज कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, राइट? ठीक है, इन डिस्क्रीट डोमेन, इन डिस्क्रीट डोमेन। सो कौन सा सिग्नल बनेगा ये? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 1/4। 1/4 का ये कांस्टेंट है जीरो टू इन्फिनिटी तक, तो कौन सा बनेगा ये? इसका भी पावर बनेगा, है ना? ये भी पावर ही बनेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? बाकी बच्चे लोग आंसर नहीं कर रहे हो, क्यों? चलो इसका बताना। डी। कॉपी में अच्छे से लिखते रहना है, ठीक है? और क्वेश्चन का जवाब भी देना है, खाली नहीं बैठना। डी 3 to power mod n, 3 to power mod n un। आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू आंसर। 3 to power mod n un। आंसर करिए। 3 to power mod n un, 3 to power mod n un। 3 to power mod n un। So do you think that this will become a rising signal? बच्चा लोगों, this will become a rising signal। ये एक राइजिंग सिग्नल बनेगा। यहाँ पे 1 आएगा, 3 to power 0, यहाँ पे 3 to power 1 आएगा 3, यहाँ पे 3 to power 2 आएगा 9, 3 to power 3 27, 3 to power 4 81 and so on। So 0 1 2 3 4 and so on। It is a rising signal। How many of you understood the point? It is a rising signal, and since it is a rising signal, it will be called as neither energy nor power। क्या है? ठीक है, neither energy nor power। ठीक है ना? परफेक्ट, ग्रेट। ई पार्ट। ई पार्ट। un plus u minus n, un plus u minus n। ई पार्ट क्या लगता है क्या होगा? मैं वेट कर रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा, पहले मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग। मुझे बताओ पहले। un plus u minus n, सब लोग बताएंगे, देन आई विल मूव। पहले सब लोग आंसर करो, फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी ड्रॉ un, पहले हम un ड्रॉ करते हैं, ठीक है? हमें पता है un इज, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, इस तरीके से, तो ये सब जगह 1 होगा, ठीक है?
अगर हम u ऑफ माइनस एन को ड्रॉ करें, u ऑफ माइनस एन को ड्रॉ करें तो u ऑफ माइनस एन कैसा ड्रॉ होगा? इससे मुझे एक पॉइंट भी आपको बताना रहेगा। देखिए, सो u ऑफ माइनस एन, इसका इन्वर्ट कर देंगे तो 0 पे वो 1 रहेगा, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा? इन दोनों को ऐड करने पे क्या आपको 0 पे 2 मिलेगा? बस इतना बताइए। 0 पे 2 मिलेगा, बाकी सब जगह 1 मिलेगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रेस्पॉन्ड। 0 पे आपको 2 मिलेगा, बाकी सब जगह आपको 1 मिलेगा। सही लग रहा है? सही ना? अब देखिए, 0 पे 2 मिलेगा, बाकी सब जगह आपको 1 मिलेगा, तो क्या इस सिग्नल को ये लिखा जा सकता है? इट इज 1 प्लस डेल्टा एन, 1 प्लस डेल्टा एन, क्योंकि 1 तो सब जगह है ही, बस 0 पे 2 है तो वो 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या हम इसको 1 प्लस डेल्टा एन लिख सकते हैं? और मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था क्लास में भी, और शायद आपको पता होगा, एनर्जी सिग्नल प्लस पावर सिग्नल इज इक्वल टू, प्लीज टेल मी, एनर्जी सिग्नल प्लस पावर सिग्नल इज इक्वल टू एनर्जी होता है, पावर होता है, या नाइदर एनर्जी नॉर पावर होता है? बताइए, एनर्जी प्लस पावर इज एनर्जी, या पावर, या नाइदर एनर्जी नॉर पावर? एनर्जी प्लस पावर इज एनर्जी, पावर, या नाइदर एनर्जी नॉर पावर? बताया था मैंने क्लास में आप लोगों को, निहारिका, विधान भाई, राज भाई, एनर्जी प्लस पावर इज एनर्जी, पावर, या नाइदर एनर्जी नॉर पावर? देखिए, इट इज अ पावर सिग्नल। थोड़ा ध्यान हो तो मैं बता देता हूँ, एक बार रिकॉल कर देता हूँ आपको। ठीक है, कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इसको, कोई छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये सिग्नल है मेरे पास, और यहाँ पे यूटी है। ठीक है, तो ये एनर्जी सिग्नल है और ये यूनिट स्टेप है, तो ये खुद एक पावर सिग्नल है, ये खुद एक एनर्जी सिग्नल है। सो एक्स टी इज इक्वल टू एनर्जी सिग्नल प्लस पावर सिग्नल। अब ऑब्वियसली क्योंकि इसके अंदर एक पावर सिग्नल है, तो एक्स टी की एनर्जी क्या आएगी? एनर्जी सिग्नल की एनर्जी तो फाइनाइट वैल्यू होगी, लेकिन पावर सिग्नल की एनर्जी क्या होगी? इन्फिनिटी। सो एनर्जी ऑफ एक्स टी इज इन्फिनिटी। अब अगर हम एक्स टी की पावर निकालेंगे तो एनर्जी सिग्नल की पावर 0 होती है, और पावर सिग्नल की पावर पी ही होती है, तो आंसर पी आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप इस वाले कंसेप्ट से या लॉजिक से देखोगे तो एनर्जी प्लस पावर सिग्नल इज अ पावर सिग्नल। ठीक है बंधु, थोड़ा समझ में आया ये? सो एनर्जी प्लस पावर इज अ पावर सिग्नल। So 1 plus delta n, this is a power signal, this is an energy signal, this is a power signal. Understood or not? ठीक है, great. Now let's come to the last point. Last point, F. देख लेते हैं F क्या है बंधु। आप लोग आंसर करिएगा, then we will move to next question. F में लिख देता हूँ, F क्वेश्चन क्या है? e टू पावर माइनस मॉड टी प्लस यू टी, बताइए, इट इज एनर्जी और पावर? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर। सब लोग आंसर करेंगे? सब लोग आंसर करेंगे? क्या ये इसी लॉजिक से होगा? क्या ये इसी लॉजिक से होगा? क्या ये इसी लॉजिक से होगा बच्चों? देखिए, अगर आप e टू पावर माइनस मॉड टी को ड्रॉ करो, e टू पावर माइनस मॉड टी, तो वह ऐसा ड्रॉ होगा, इधर ऐसे गिरता है वो, इधर ऐसे फॉल होता है, ठीक है ना?
और यूटी अगर हम देखें तो यूटी तो यूनिट स्टेप रहता है, वो इस तरीके से रहेगा। अच्छा, क्या ये एक एनर्जी सिग्नल है और ये एक पावर सिग्नल है? सो एनर्जी प्लस पावर इज इक्वल टू पावर सिग्नल। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स? हो गया है? All of you understood the point. So energy plus power is equals to power signal. Done. So this concept is an important concept, can be used anywhere. Okay, this is valid in discrete and continuous. In discrete and continuous, it is valid both, in both the cases. It is valid in both the cases. Okay. Now let's move to next question. I hope all of you have written the question also the solution. ठीक है, question लिखना बहुत ज़रूरी है, question मत skip करना. ठीक है. Now let's come to the second part. Second question. Please write the question, all of you. First of all, I would request all of you to write the question. पहले question लिखो. लिखा आप लोगों ने question? Consider the time invariant system with input xt. ठीक है. Show that if xt is periodic with period t, so output is also periodic with period t. Okay. ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट है, यहाँ पे लीनियर डाल देना. ठीक है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है. ठीक है, यहाँ पे लीनियर और लिख देना. कंसिडर अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम विद इनपुट xt एंड आउटपुट yt. शो दैट इफ xt इज पीरियोडिक विद पीरियड कैपिटल T, so the output is also periodic with period capital T. Now this can be solved using Fourier transform also, Laplace transform also. Okay, using the concept of Laplace and Fourier. But since we are not into those topics, so we'll try to solve it using the LTI system property. First of all, tell me that LTI system का output कैसे निकालते हैं? How we find the output of the LTI system? Output of LTI system. Convolution, yes, convolution. I think all of you remember that point. Okay, so it is convolution. Convolution. So we can say that yt equals to xt convolve ht, that is equal to minus infinity to infinity h tau x of t minus tau d tau. Now if yt is equal to this, if yt is equal to this, then yt minus capital T, yt minus capital T, what is capital T is a period of xt, right? So yt minus capital T is equal to minus infinity to infinity h tau x of t minus capital T minus tau d tau. Okay, so simply we have replaced t by t minus capital T in the whole equation. So t minus capital T in the whole equation. Now since xt is periodic with period capital T, then xt is equals to xt
प्लस माइनस कैपिटल टी। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये पीरियोडिक है। अब अगर मैं इसमें कुछ और चेंज भी कर दूं, लेट अस से एक्स ऑफ टी माइनस टाउ विल बी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस माइनस कैपिटल टी माइनस टाउ। ओके, मीन्स इफ एनी पीरियोडिक सिग्नल, किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को आप टाइम पीरियड से शिफ्ट करते हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक्स टी के बराबर होगी। सो वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज दैट yt minus tau is equal, sorry, yt minus capital T is equal to minus infinity to infinity x h tau x of t minus tau d tau, and this is equal to yt, this is equal to yt. So yt minus capital T is equal to yt. So yt is also periodic with period कैपिटल टी। किस किस को समझ में आया पूरा प्रूफ? जल्दी बताओ, किस किस को पूरा प्रूफ समझ में आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द कंप्लीट प्रूफ? कि हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया। व्हाट इज एच टी? एच टी क्या होता है बच्चों? एच टी क्या होता है? एच टी भैया मेरे, एच टी इज द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, राइट? एच टी होता है इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, so using the impulse response we can find the output or the response of any input xt. okay, डन हो गया? क्या ये सबको समझ में आया? आप लोगों ने लिखा? इफ यू हैव नॉट रिटन प्लीज राइट इट। इसको लिख लो जल्दी से, ठीक है, इसको लिख लो। इफ यू हैव नॉट रिटन प्लीज राइट इट। डन है? डन है? हैव यू ऑल रिटन दिस? हैव यू ऑल रिटन दिस? ये हो गया है। कैन वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट नाउ? सब बच्चों ने लिख लिया है? राज भाई, विधान, निहारिका, डन? ग्रेट. Now let's move to next question. This is a very brilliant question, very good question. You will enjoy this question. Okay, this is question number 3. First of all, I request all of you to write the question. Okay, then only we can proceed. First of all, write the question, then only we can proceed. पहले क्वेश्चन लिखो, फिर देखेंगे आगे। ठीक है, कंसिडर द 3 सिस्टम्स। 3 सिस्टम का इसने वो दे रखा है विद द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। तो हमें सिस्टम 1 के बारे में देखा है, सिस्टम 2 के बारे में दे रखा है, सिस्टम 3 के बारे में दे रखा है। पहले इक्वेशन लिख लो, फिर देखेंगे। Input output relation of the 3 system. Input output relationship of 3 systems. लिख लीजिए। Yes, I told you ना, you should have a separate copy for DPP. That would be helpful while revision. ठीक है, दोनों अलग अलग होंगी तो खिचड़ी नहीं बनेगी। नहीं तो क्या होगा, क्लास नोट्स जो हैं वो हम चैप्टर 2 में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े जंबल हो जाएंगे। तो दैट वुड बी बेटर कि आप इसकी कॉपी अलग से बना लो। मैंने ये पहले दिन बताया था आपको।
पहले लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, आई एक्सप्लेन। ओके, पहले आप लिख लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा। आप लिख लो, आई एक्सप्लेन द होल क्वेश्चन ऑल्सो एंड विल सॉल्व इट। ओके 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 ओके, just make a separate copy for DPPs. That would be helpful for while revision, and it is better to always write question then solution. Okay, I'm giving time to write question also, so don't इसको ऐसा मत करना, don't do it like this कि you are not writing the question. Please write the question then solution. Okay, that would be helpful for, लिख लिया? Can we start solving this? Can we start solving this? Okay. Now, first of all, you can see that don't write anything. Okay, I'll solve this question. It's a very good question. I'll solve this and explain you this whole question. Okay. Now, in this question, generally, 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 while defining any system, what we consider xn, while defining any system, xn is input and yn is output. Okay, so yn is output. Now from these three equations, can we say that system 1, the equation is generally, whenever we define any system, input is xn and output is yn. So I'll write that point here. Generally, input is xn or xt, output is yn or yt. So the first system is defined as, if we look at the first system, I hope all of you have written it. So we can say that output n is equal to input n by 2 when n is even and 0 when n is odd. Okay, done hai ye? So this is how we actually change this relationship into our statement form. Second, output n is equal to input n plus input 1 upon 2 input n minus 1 plus 1 by 4 input n minus 2. Third, this last relationship, output n is equal to input 2n. Okay, all of you understood these three equations or not? First of all, please tell me, are all of you able to understand these 3 points? Okay, how we are writing this equation? Simply converting the given equation in the terms of input and output, right? सब लोग कर पा रहे हैं ये? All of you are able to do this, understand these points? Now, let's solve it further. आगे करते हैं. देखिए, अब now we start solving this complete connection. Okay, if you look at this complete connection, the input to the system 1 is, now let's come on to the connection. पहला, input to system 1 is xn. Okay, input to system 1 is xn.
What will be the output? Can you please tell me? The input here is xn. The output will be, using this relationship, we can say that output is equal to x of n by 2 when n is even and 0 when n is odd. Okay, this is your output. Now this becomes the input to system 2. Input to system 2. Okay, now this is the input to system 2. Okay, okay. Now here we can see that the output is equal to input n plus 1 upon 2 input n minus 1 plus 1 upon 4 input n minus 2. So we can say that output of system 2 is, output will be of system 2. I hope all of you remember that system operates only on variable n. System operates only on variable n. You remember that point? I repeatedly focused on this point in the class. Okay, so output will be xn by 2 plus 1 by 2 x of n minus, n will be replaced by n minus 1, right? N will be replaced by n minus 1. So n minus 1 by 2 plus 1 by 4 x of n minus 2 by 2 when n is even and 0 when n is odd. Understood everyone? N simply replace n by this. ये तो यहाँ पे तो ऐसे कैसे आ जाएगा? In this step we will have directly the input. In the second step we replace n by n minus 1. In the third step we replace n by n minus 2. किस किस को ये समझ में आ गया? How many of you understood this point? How many of you understood this point? Understood everyone? Now the last step. The last step, if you see that this is the input to step system 3. This is the input to system 3. This is the input to system 3. Now input to system 3, the output of system 3 is simply replace n by 2n in the input. Simply replace n by 2n in the input. So output of system 3 so simply replace n by 2n in the whole equation. So we got xn plus 1 upon 2 x of 2n minus 1 by 2 1 by 4 x of 2n minus 2 by 4 when okay, I'll write थोड़ा सा लेफ्ट में लिखता हूँ, यहाँ पे भी चल जाएगा, थोड़ा छोटा लिखूंगा. So replace n by 2n. So we get xn. We replace n by 2n here. We got 1 by 2 x of 2n minus 1 by 2. And third 1 by 4. Replace n by 2n. X of 2n minus 2 by 2. So when 2n is even and 0 when 2n is odd. So क्या कभी 2n odd होगा? n integer है, n is an integer value. 2n is never odd. Okay, so this condition is gone. ये condition खत्म हो गई है. This condition is gone now. So 2n is always even. So output of system 3 will be xn plus 1 by 2 2n by minus 1 by 2 1 by 4 n minus 1 by 2
n minus 1 by 2. ओके, सो व्हेन, सो दिस कंडीशन इज गॉन, अब तो खत्म हो गई है, तो आउटपुट हमारा इसी के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? If we look at this point, 2n minus 1 by 2 is always a non-integer value. 2n minus 1 by 2 is always a non-integer value. So, x of 2n minus 1 by 2 will always give us 0 value. 2n minus 1 by 2 is always a non-integer value. So, the final output is xn plus 1 by 4, x of n minus 1 by 2. How many of you understood this? I'll repeat this solution. I'll repeat the solution. How many of you understood this? थोड़ा बहुत समझ में आया? Okay. So I'll repeat the solution for more clarity. Okay, I'll repeat the solution for more clarity. I'm just rubbing this. Okay, perfect. So let's solve this again. Okay, now let's solve this together. Okay, first of all, write this. If you have not written, please write this statement form. Please write this statement form. Please write this statement form. पहले लिखिए इसको, फिर देखते हैं क्या करना है. Have you all written this statement form? ये लिख लिया है आप लोगों ने, ये statement form of the input-output relationship? Have you all written this statement form of the input-output relationship? लिख लिया है? Perfect. Now let's begin the solution. So let's begin the solution. Now let's solve the connection. Okay. So input is xn. Input is xn. So we got the output, that is xn minus xn by 2. Okay. We can write this relationship as xn by 2 also. Okay, because we already know that input to this n by 2 has to be an integer value. So it is already clear that n has to be even value and it is 0 for n odd. So we can make this solution simple by not writing it like this. Okay, so we can directly write it like this also. That is also correct. Now this is input to the second system. This is system number 1. This is input to the second system. Now if we look at the relationship of the second system, the first term is simply same as the input. So we get the first term as xn by 2. In the second term, we have n will be replaced by n minus 1. Remember that n will be replaced by n minus 1. N will be replaced by n minus 1. And at the third point, n will be replaced by n minus 2. How many of you understood the point? अच्छा, by 2 नहीं था ना उसमें. N minus 2. Understood this point? Simply, first term is simple as the input. Second term n replaced by n minus 1. Third term n replaced by n minus 2. ठीक है. Now, अच्छा वो by 4 अंदर नहीं था, वो पिछले वाले में गलती से by 4 अंदर ही चला गया, कोई बात नहीं. Now the third step, system 3. System 3 simply replaces n by 2n in the system equation. Okay, in the input n is replaced by 2n. Simply n is replaced by 2n. So n is replaced by 2n, we got xn. N is replaced by 2n. N is replaced by 2n. Remember, n is replaced by 2n.
So 2n minus 1 by 2 plus 1 by 4 2n minus 2. So this is the relationship. Now 2n minus 1 by 2 is always non-integer. So x of 2n minus 1 by 2 is 0 always. So we can say that the final output is equal to how many of you understood this? Please respond. This is the final output. And we can see that this is simply linear. And is it causal? Is it causal? क्या ये causal होगा? नहीं, लग नहीं रहा ये causal है. लग नहीं रहा है मुझे ये causal है. It is non-causal and it is time varying. Please observe this. इस equation को देखो. ये causal नहीं होगा because for example y of 3 is equal to x3 plus 1 by 4. So y3 is dependent on future value. So it is non-causal, linear and time varying because here we have 2n. So it is time varying. Okay, now please respond how many of you understood this solution. किन किन बच्चों को ये solution समझ में आ गया? How many of you understood the solution? How many of you understood the solution? Vidhan, Krishnendu, Raj, the gateway. All of you understood the solution? Okay. Please write it if you have written. Great. Okay. Perfect. So we finished the session here itself. मुझे एक और कराना था but the time की कमी है. So no time is left. So we'll solve the question, next question in the next session. Thank you. Bye bye.